Welcome everyone. Today we are going to continue with the chapter number 7, integrals of class 12. Now what we have discussed till today is all the different methods of indefinite integral. Correct? We did method of substitution, we did method of partial fraction, we did method of integration by parts. Correct? Now there are few types which are based on the types of let me say something like integration by parts. Correct? With the help of understanding of integration by parts, we can go for some more types of integral. Let's try to observe how we are going to understand those new types of integrals and how we are going to solve them. Correct? There are not much, there are only three. First one is something like this: integral of root x square plus a square dx. Correct? Let's go with the minus first, then I'll explain my plus. Root x square minus a square dx. Now how can we solve this kind of particular integral? You may be thinking. So if you watched the last video carefully, there was a certain problems like sine inverse or cos inverse. Correct? In that problem there was a point where we are getting something like this, and at that time I told you that there are method or the formula by which we can solve this particular thing directly and very easily, but we couldn't do that at that particular moment of the time because we don't know the formula of this. Now onwards we are going to remember this as a formula. Correct? But to reach to the right hand side, we need to solve this particular thing, and we can solve this with the help of integration by parts. How we are going to solve this? So I am going to consider this as a first function and 1 as a second. So I am going to write like this: x square minus a square into 1 dx. This is my first function and this is my second function. Correct? And now if I apply integral by parts, so क्या दी formula? U as it is, that means first function as it is, integral of v dx minus integral d by dx of square root of root x square minus a square, integral of 1 dx into dx. Correct? So this remain as it is, x square minus a square, integral of 1 is x, minus integral derivative of this function is going to be 2 times square root of x square minus a square into x square का derivative 2x and 1 का integral x dx. So this 2 get cancelled. I am left with x into square root of x square minus a square minus integral of x square upon square root of x square minus a square dx. Now how are we supposed to solve this particular scenario? तो कि भाई ये अब हम कैसे करेंगे? तो what we can do, pay attention, x square root of x square minus a square. Now I can understand I have x square minus a square. So what I can do is, let me give minus a square, and if I give something or if I take something, then I have to give something as well, divided by square root of x square minus a square dx. Are you getting me? Now if I split them, pay attention, if I split them, x into square root of this minus, if I split them, I will get square root of x square minus a square dx, because I will consider this as a single term. Correct? तो one of them square is cut, एक square ऊपर बच जाएगा, plus minus a square constant and 1 upon x square minus a square dx. So this is nothing but our original integral. Sorry, इसे हम I बोलेंगे definitely. So let me call this as I. So x time root x square minus a square minus I minus a square. Do we know that particular integral? dx upon root x square minus a square. Do we know something like that? Yes, definitely. हमने formula सीखी है. क्या आएगा? log modulus of x plus square root of x square minus a square plus c. This will become 2i x square root of x square minus a square minus a square into log modulus of x plus root x square minus a square plus c,
and you can give this 2 on the other side. So I equals to x by 2 square root of x square minus a square by 2 log modulus of x plus square root of x square minus a square plus c. Writing c by 2 doesn't affect anything to us, correct? अब ऐसा हो तो यहाँ पे c dash कर लो, c dash होगा and c dash by 2 will be c, so it won't affect. So this is the formula. Instead of I, let's write square root of x square minus a square dx is equals to x by 2 square root of x square minus a square by 2 log modulus x plus square root of x square minus a square plus c. This is how we are supposed to solve this kind of integral. Now what we are supposed to do कि ये तो हमने समझ लिया, but there may be chances के एग्जाम में पूछे कि simplify और integrate square root of x square minus a square dx. तो you can't simply just write like this and say yes it is done. Oh 3 मार्क का क्वेश्चन इतना easy. No. You are supposed to solve like this. Otherwise नहीं हो सकता ये. Are you getting me? So we need to be taking care of those kind of a situation कि हम इसमें किस तरह से बाहर आए, है ना? फिर 3 marks question is there and you just simply अरे ये तो फॉर्मूला है, ये फटाक से लिख देंगे और बोलेंगे 3 मार्क हो गए. ऐसे थोड़ी ना 3 मार्क मिलने. हाँ, when we are solving such kind of a problem and by doing that and we are arranging in this particular manner, then we are supposed to write this directly, not before that. है ना? यानी कि सिंपली ये क्वेश्चन में आता है तो ये नहीं लिख के आएंगे. हाँ, अगर क्वेश्चन कोई डिफरेंट फॉर्म में है and we are reducing that into the form of this, then we can go for the direct formula. Otherwise we have to do something like this. Are you getting it? It's not that simple as you are thinking. So we need to be taking care of such kind of a things और इस तरह से हमें इस तरह के problems को approach करना पड़ेगा. Correct? You can pause the video and note it down. Now we understood one of the method, correct, by integration by parts. Now you can solve this similar problem by using trigonometric substitution. Let x equals to a sec theta, correct? So if I find the derivative, what will be x dx a derivative of sec theta tan theta d theta. So now my integral will become square root of, instead of x it will be a square sec square theta minus a square, and instead of dx it will be a sec theta tan theta d theta. Now if I simplify this, you can understand a square जो है वो कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा. It will be a into this a square sec square theta minus 1 is tan square theta and it becomes tan theta into sec theta tan theta d theta. Now if you look at this particular question, how are we going to solve this from over here? See, this is a square. Let me say a square common. If we want, we can take a square common and it becomes sec theta into tan square theta d theta. Now how are we supposed to solve from here? That I am going to give it to you. Because we did something like this, correct? This is not something for the first time we are doing it, है ना? तो आप लोग आराम से कर सकते हो. How you are supposed to do that? You people should find the way out, correct? I expect कि आप लोग यहाँ से try करो, try yourself and get the formula. Correct? Everything will not be provided by me. कुछ तो आप लोग भी करोगे ना. सब अगर मैं ही यहाँ पे आपको इस तरह से प्रोवाइड करूंगा, then how will you develop a thinking, है ना? If you don't get it, you can give tell me in the comment section and maybe I will make the video for you. But before that, I want you to try कि अगर मेरे पास इंटीग्रल ऑफ sec थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा है तो क्या कर सकते हैं, है ना? Maybe you can think of something like कि tan स्क्वायर थीटा is equals to sec स्क्वायर थीटा minus 1. तो ये हो जाएगा sec क्यूब थीटा माइनस sec थीटा. आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया, करेक्ट, है ना? यू कैन थिंक बाय योरसेल्फ और यू कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स, है ना? यहां से कैसे देखोगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे बनेगा? इट इज टोटली अप टू यू. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू पीपल गिव इट अ ट्राई. अगर आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, प्लीज give your suggestions or feedback for this in the comment section, so that if you want it, I will definitely solve it for you and make a video for that.
Am I clear? So this is how we are supposed to solve this kind of a क्वेश्चंस. और ये एक्चुअली एक अनदर मेथड है, आप उस मेथड से तो ऑलरेडी कर ही सकते हो जो मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन की. फ्रॉम दिस ऑल्सो वी कैन गो टू दैट आंसर, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई बाय योर सेल्फ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. एम आई क्लियर? You can pause the video and note it down. Now let's have a look at second formula, integral of root x square plus a square dx. We just did x square minus a square, correct? So in the same manner, if we go with the integration by parts, so let me say something like this. One will be the second function. So u as it is, integration of 1 dx minus d by dx of x square plus a square, integral of 1 dx into dx, correct? So this x square plus a square as it is 1 ka integral x minus derivative of this will be 2 times divided by x square plus a square, 2 divide by 2 into root x square plus a square into 2x into x dx. So don't you think this is somehow similar method we are doing, correct? Minus integral of x square upon square root of x square plus, now here it is plus, so I will give plus a square minus a square dx. So this becomes x times square root of x square plus a square minus square root of x square plus a square dx minus minus plus a square common 1 upon square root of x square plus a square dx. This is nothing but your I, so it becomes 2i x square root में x square plus a square into log modulus of x plus x square plus a square plus c. And if you divide it by 2, so x by 2 x square plus a square by 2 log modulus of x plus x square plus a square plus c. Now it is just similar to the first one, just यहाँ पे माइनस था तो हमारी फॉर्मूला में यहाँ पे भी माइनस, ये भी माइनस एंड दिस माइनस. दिस विल रिमेन पॉजिटिव ऑलवेज, दिस विल नेवर बी नेगेटिव, करेक्ट? बस इतने छोटे से चेंजेस है, 1 2 और 3. अगर यहाँ बीच में माइनस है तो ये माइनस आएंगे और प्लस है तो सब प्लस. This is how we are supposed to solve. Now if you want you can solve this also with the help of a trigonometric function. You just need to let x equals to a tan theta, correct? But I am definitely sure कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. For simple instance, in the previous one when you got something like this, a square into tan square theta into sec theta tan theta, I'll just let you know because I'm feeling it कि आपको वो difficult लगेगा, but still I want you to try. कैसे try करोगे? Go for integration by parts, but consider this as a first function and this as a second function. Now I guess you people can try because यहाँ से जो begin करना ना, it's very difficult कि किस तरह से सोच के करें. Because if you take a product tan square theta into sec theta, you will be start thinking कि अब ये कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और हम इसको कैसे solve कर पाएंगे, correct? So go for this tan theta into sec theta tan theta. Tan theta को u ले लो और sec theta tan theta को v ले लो. Now why I thought of this, because इसका integration हमारे लिए easy रहेगा rather than taking this in the integral form, correct? उसका भी integration पता है, but still this will be more easier than going with this one. Are you getting? So इस तरह से try करना हो जाएगा. Similarly in this particular one you can go with x equals to a tan theta. सिंपल सा टारगेट है क्योंकि tan square theta plus 1 is sec square theta, so that will help you to get to the solution. Plus in that one also if you come up something like this, think in that way how we are going to adjust integration by parts and get to the solution. Am I clear? Chalo, let's have a look at the third one. What do we have as a third formula? That is, third one is integral of a square minus x square dx. We did x square minus a square in square root. We did x square plus a square in square root. Now it is a square minus x square in square root. So see, before we start, it is very easy to understand. अब तो clear हो गया कि हाँ भाई यही हमारा u आएगा, integral of 1x
माइनस इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव आएगा -2x/2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 का x dx। आई एम डूइंग लिटिल बिट क्विकली, करेक्ट। ये सारे स्टेप्स मैंने हटा दिए, डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मतलब जो सिंप्लीफिकेशन था वो भी कर दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। Now this 2 get cancelled. Now if you want you can remove this minus x minus outside, but I will intentionally not removing that. मैं उसको intentionally नहीं हटा रहा हूं because I want negative x square, divide में है square root of a square minus x square, so plus a square minus a square dx, correct? So x square root में a square minus x square माइनस ये आपका पहले इंटीग्रल में बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर और इंटीग्रल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। सो दिस विल बिकम आई, सो ये हो गया 2i, दिस इज एज इट इज। एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, 2 से डिवाइड कर दो, वी गॉट द फॉर्मूला एक्स बाई 2 square root of a square minus s square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c. So I know that we are getting it little bit much detail, but why I am going into detail, क्योंकि अगर किसी ने 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपको पूछ दिया कि इंटीग्रेट दिस, देन यू शुड नॉट बी थिंकिंग लाइक अरे ये तो हम एज अ फॉर्मूला यूटिलाइज करते थे, हमें तो आज तक पता ही नहीं है कि इसका इंटीग्रेट कैसे होता है। आर यू गेटिंग? मैं यहाँ पे यूनिक फॉर्मूलाज का इंटीग्रेट करके आपको समझा रहा हूं जितना हमारे लिए जरूरी है, जितना हमारे लिए एग्जाम में आ सकता है। एज एंड व्हेन नीडेड वी विल रिमेंबर द फॉर्मूला डायरेक्टली, करेक्ट, बट देयर आर फ्यू विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी डिड अंडरस्टूड इन द प्रीवियस टॉपिक्स एज वेल, है ना, व्हेन वी अंडरस्टूड दो 6 फॉर्मूलाज इन अ डिटेल्ड वे, सम पर्टिकुलर फंक्शन वाली, करेक्ट। सो दैट इज हाउ वी आर सपोज टू understand this kind of functions or this type of integrals, because if they ask simply integrate this, then you are not supposed to write like this, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे तो फिर वो 3 मार्क नहीं देने वाले। वी नीड टू सॉल्व दिस इन दिस मैनर, बिकॉज दिस formulas or some more types of integrals are based on integration by parts, so they may think like let's check their concept with the help of this formulas, उनको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने पूछ लेते, अगर उन्हें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता होगा they may come up with something like this, correct। तो जिन्हें आता होगा वो कर पाएंगे, रिमेनिंग स्टूडेंट्स will left this कि वो लोग तो सोचेंगे तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फॉर्मूला से हमारा तो इंटीग्रेशन का आंसर आता है, करेक्ट। सो दैट्स द वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्वियस, करेक्ट, बट this is how this formula should be understood. Now as we did this one with the trigonometry, first one with the trigonometry, similarly you can do this one as also with the help of trigonometry, considering x equals to a sin theta, because here it is sin, x square is in after negative, so if I take 1 minus sin square theta, that will help me get into the form of cos square theta and will come out with cos. Maybe you can try with x equals to a cos theta as well, because that is the same thing, 1 minus cos square theta will give us sin square theta, तो sin theta डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फिलहाल आप टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्स्ट बुक ने बोला है कि ऑल दिस 3 फॉर्मूलाज कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। पहले वाले में देखा a sec थीटा, सेकंड विद a tan थीटा एंड थर्ड विद a sin थीटा, करेक्ट। सो वी कैन प्रूव देम बाय दैट आल्सो, जिसमें मैंने पहला वाला आपको बोला, वैसे आप सेकंड और थर्ड में भी लेट करके जो कहा है वो करके आप सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर सकते हो, है ना, फॉर योर ओन बेनिफिट, because at one point some kind of integral can be generated so that we can be helpful to understand the concept of integral by parts, correct. So that will definitely help. So this is how we are supposed to solve and remember the formula. Yes, definitely. So from my point of view, generally what I used to tell students, even though it's a simple 3 formulas, I tell them at least write 15 times, at least write 15 times, so that this can be literally in your mind, and it will just simply strike whenever you something like this, it will simply strike, oh yes, we are supposed to do like this, and this is the formula. Not even the mistake of plus and minus sign, you can't afford that. Am I clear? Please pause the video and note it down. Now let's try to understand few examples based on all these 3 some more types of integral. So let's say example,
It is given something like this. Find integral square root of x square plus 2x plus 5. So if you do remember, we used to solve a quadratic equation like this in denominator. What we were doing in that particular case, we were making it a perfect square. That's what we are going to do here as well. Let me call this as I. If I want to make a perfect square, x square plus 2x plus 1. Correct. Now out of 5, 1 is taken. So we are left with 4 dx. So this becomes square root of x plus 1 square plus 2 square dx. Correct. And if you remember the formula हमने 3 सीखी, x square minus a square का integral will be x by 2 square root of x square minus a square minus, I told you कि जब नेगेटिव होगा तब नेगेटिव आएगा, a square by 2 log modulus of x plus square root of x square minus a square plus c. Similarly second formula हमने देखी, square root of x square plus a square, sorry dx आएगा प्लीज, x by 2 square root of x square plus a square plus a square by 2 log modulus x plus square root of x square plus a square plus c. And the third one we understood is a square minus x square dx. Again x by 2 square root of a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x by a plus c. You are supposed to remember this. I told you 15 times कम से कम, है ना, उससे ज्यादा लिखोगे तो और बेहतर है, लेकिन 15 बार तो कम से कम लिखनी ही है. करेक्ट. एंड दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर इट. जब माइनस है तो माइनस माइनस माइनस, व्हेन इट इज प्लस ऑल ऑफ देम आर प्लस. और ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उल्टा, जनरली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, व्हेन इट इज इन रिवर्स ऑर्डर you are supposed to simply remember this as sine inverse x by a. Correct. And if you look at all their first term, so sub mein x by 2 x by 2 x by 2, whatever the integrand we have, same thing. Correct. So that's how you can generate some logic out of it and you can remember it in a easily and good way. So which form? This one. Correct. So instead of x, it is x plus 1 by 2 square root of x plus 1 square plus 2 square plus a square. So a square itself 4 and a is 2, so a square is 4 divided by 2 log modulus of x, तो x की जगह पे है x plus 1 plus square root of x plus 1 square plus 2 square modulus close plus c. And just simplify this. Correct. So it will be x plus 1 by 2. Again I can replace this with this and this, x square plus 2x plus 5 plus this 2 get cancelled, 2 times log modulus of x plus 1 plus square root x square plus 2x plus 5 plus c. This is how we are supposed to solve this kind of example. है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है. यहाँ पे भी वही सब माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस में दिया है, पॉजिटिव में दिया है. व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मूला वी कैन जनरेट, वेदर इट मे बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. So out of these three only we are going to see. So it is not going to be that difficult for us to solve. I hope you people are getting it correct. And let's go for the नेक्स्ट एग्जाम्पल. लेट मी रिमूव द फॉर्मूला. करेक्ट. तो क्या कि आप लोग उसको याद देख के ना उसको वो मत करा करो, डायरेक्टली आंसर्स फाइंड करने की तैयारी में रहते हैं आप लोग, है ना. सो लेट मी रिमूव दैट एंड लेट्स गो फॉर सम मोर एग्जाम्पल. I equals to integrate 3 minus 2x minus x square dx. I just told you कि पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो सकता है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो सकता है, एंड ऑल दोस थिंग्स. करेक्ट. एंड वी डिड अंडरस्टूड समथिंग लाइक दिस इन दैट सम पर्टिकुलर फंक्शन के जब हमारे पास dx अपॉन नीचे स्क्वायर रूट में आता था. करेक्ट. सो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कॉमन निकाल लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx. I took negative common in the square root. Simple.
अब क्या करेंगे तो कि भाई परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 चाहिए, है ना। तो प्लस 1 दिया तो माइनस 1 देना पड़ेगा। सो -3 -1 -4 dx। प्लीज पे अटेंशन है, यहाँ पे ध्यान देना अभी कुछ। सो माइनस x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर dx। एंड इफ यू टेक द कर्ली ब्रैकेट आउट, तो ये माइनस माइनस 4, यानी कि लेट मी राइट 2 स्क्वायर ओनली, 4 नहीं लिखते, 2 का स्क्वायर ही हमारे लिए बेटर रहेगा। माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। करेक्ट। ये प्रीवियस प्रॉब्लम का है, उसको मैं रफ कर देता हूं सो दैट वी कैन हैव द स्पेस टू डू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो दिस लुक्स लाइक a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एम आई राइट। तो क्या दी फॉर्मूला, x/2 इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। अगेन दिस 2 गेट कैंसल और यहाँ पे 2 आएगा, एंड दिस कैन बी रिटर्न एज x प्लस 1/2 square root. This generated from here, this is from here, and this is from here, and finally this. So 3 minus 2x minus x square plus 2 times sine inverse x plus 1/2 plus c. This is how we are supposed to solve. And I don't think so कोई difficulty ये कोई और नहीं, आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल नंबर 23 और एग्जाम्पल नंबर 24 ही है। करेक्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखो इसमें फॉर्मूला ज्यादा है नहीं। करेक्ट। वी डिड वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर हियर, वी डिड वन ऑफ देम इज हियर। एक बची थी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, तो विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला इन द एक्सरसाइज। So as far as what I am thinking is, we did understood this particular concept in a good manner, है ना। हमने फॉर्मूला कैसा है वो भी देखा, उसका डेरिवेशन ध्यान में रखेंगे because they may ask as the question in the exam, and how we can solve a particular type of a problem where we use this particular formula of root a square minus x square or root x square plus a square. Am I clear? So if you do understood this concept, then please like my video, है ना। आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो press the like button so that I can get the feedback that you got it. Simple. And if you have not subscribed my channel yet, then please do subscribe it, and thank you so much for watching.